माड़े चैनल की सब्सक्राइब करी किनो बेल आइकन की दबाई छोड़ो कि तुसा की माड़े वीडियो नी अपडेट मिलनी रहे। अस्सलाम वालेकुम माड़ी पटवारी किचन फैमिली, मैं उम्मीद करनी हाँ तुसा सारे ठीक हो सो। अल्लाह ते रसूल ने फजल ते करम नाल अल्लाह ताला सा सारे खुशबाश रखन, दुनिया दी हर दुख तकलीफ से दूर रखन ते अपने हिफ्ज़ अमान च रखन। अज अस हम ना लगे हाँ चिकन quesadillas ते उस दसने हाँ कि किस तरह बनाई ना ते उसने विच केड़ी चीज़ पैनी है। Assalamu alaikum to all of our beautiful family members. Today we are going to be making chicken quesadillas. So we're going to show you what ingredients we need and how we make them. So let's get started. जी हम अस स्टार्ट करने हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ी ते अस इत्थै बाल लगे पहलू तेल 3 स्पून तेल लैनी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम 1 2 3। So first of all, we're going to add in 3 tablespoons of vegetable oil. You could use any oil of your choice, but as you guys already know, we prefer vegetable oil, so that's what we're going to use. You're just going to wait until it heats up a little bit, and then we're going to add in the garlic paste. ਹੁਣ अस इत्थै चाहिए किंदा थूम ते एह् 2 टिक्कियां असां किंदियां थूमै दियां एह् फ्रोजन आह्लियां ते तुसां फ्रैश भी पाई सकने हो ते असां पान लगे आं फ्रोजन। So we've added in our garlic paste now. You just want to saute it until it turns a light golden brown color. जी थूमै कि असां हुन 102 मिनट वास्ते असां जरा इसकी पकाई किंदा कि इसना जरा कच्चापन जरा ना रहे ते हुन असां बासा प्याज प्याज असां चाहिए किंदे इत्थै 2 ते उन्ना कि असां निक्का निक्का पतला पतला चप करी किंदा। So we sauteed the garlic for a few minutes, roughly about 1 to 2 minutes. Now we've added in our onions. We have 2 onions here which we have finely chopped. So we don't want to cook the onions for a long time. You just want to cook them for a few minutes as well until they turn like a translucent, clear sort of color. Then you'll know that the onions are cooked. We don't want to cook them for too long. उन्हें सा इसकी थोड़ा जा मिक्स किया तो उन्हें सा इसकी ज़रा करन देसा कि इसने पर लिड रखसा कि ज़रा किसना अपना जरा पानी जरा ना छोड़ी सी जी उन सा तक नहीं हो कि प्याज है ना जरा अपना पानी जरा छोड़िया सुनो तो उन्हें सा इसकी स्टिल थोड़ा थोड़ा बल्ले बल्ले भुनी किनसा जी चाहिए इसना थोड़ा जा कलर चेंज ना हो। So as you can see, the onions have released its own water. We're just going to wait for a few minutes until the water evaporates. And as you can see as well, the onions have started to turn clear, translucent, so it means that they are cooking. We're just going to wait until the water evaporates, and then we're going to add in our minced chicken. जी हूँ 3 से 4 मिनट हो गए असां इसकी भुन्नियो तो हूँ असां बाहर लगे हैं चिकन कीमा। So it's been a couple of minutes, around about 3 to 4 minutes since we have been cooking the onions. Now we're going to add in our minced chicken. ये असां शापा पर आंदा सा तो उठूं उन्हें क्या है सा तो ही तो असां की जरा ना इसमें कीमा बनाई तो दियो। So we've already pre-washed the chicken, and then we made it into mince. So all you want to do is now mix the chicken thoroughly along with the onions and make sure everything is coated well together. And now you want to cook the chicken until it turns a white color. हाँ जी सो तक नहीं हो कि उन्हें चिकन जरा ना अपना पानी छोड़ना पे बल्ले बल्ले तो नाले जरा ना उसना रंग भी जरा ना चेंज होना पाया तो असा इस तरह इसकी बल्ले बल्ले लाने जासा तो नालों नाल जरा ना फिर इसकी ये पकना जासी तो बाकी जरा मसाले शाले बाद ही बासा तो वो फिर सही दसा तो चिकन जरा असा आंदा ये ब्रेस्ट ना वा तो नाले असा 1 किलो आंदा सी। So as you can see, the chicken has turned white,
and is also releasing its own water. So we're going to cook it until the water evaporates fully and the chicken becomes completely dry. Here we are using chicken breasts, which we have obviously minced, and we have 1 kilo, just in case you guys wanted to know. जी उन सा तकने हो के चिकन जरा ना अपना पानी सारा छोड़ देता तो उन असा इसकी जरा ना सारा जरा पानी आ तो इसकी स्काई किन्ने So as you can see, the chicken has released more of its water. So we're just going to wait until the water completely dries. We've popped the flame up to medium high now, so that should help us to evaporate the water from the chicken. So we're going to wait until the chicken is completely dry, and then we'll show you the next step. जी उन सा तकने हो के पानी जरा चिकन छोड़या सा वो सारा सुकी गया तो उन असा इसकी जरा स्टिल और एक 5 मिनटा वास्ते इसकी चंगा भुनी किनसा तो 5 मिनटा तो बाद भुनी तो फिर से कि अगला स्टेप दसने आ कैसा क्या करना है. So as you can see, the water has evaporated from the chicken. We're just going to saute it just for a few minutes or so, and then we'll show you the next step. जी उन 5 मिनट हो गए असा चिकन की भुनियो तो गैस असा थोड़ा जा मठा कर छुड़िया तो उन असा बस इसमें मसाले तो और दसने के केड़े मसाले इसमें बने. Now we're going to add in our spices into the chicken. So we'll show you one by one the spices that we're going to use. एक निकी चम्मच असा चाय किंदा था जीरा पिठा हुआ. We have 1 teaspoon of cumin powder. एक चम्मच असा निकी चाय किंदी चिली पाउडर. We have 1 teaspoon of red chili powder. एक टीस्पून असा चाय किंदे कालियां मर्चां पीठियां हुई. We have 1 teaspoon of black pepper powder. एक निकी चम्मच असा चाय किंदी था लूनानी. We have 1 teaspoon of salt. एक निकी चम्मच असा चाय किंदी पेपरिका पाउडर. We have 1 teaspoon of paprika powder. आधी चम्मच जेडी निकी है वो असा किंदा ओरिगानो. And we have half a teaspoon of oregano. ये सारे मसाले जेडे असा बस इसमें. So what you want to do is just add all of these spices into the chicken and give it a good mix. जी असा इसमें सारे मसाले बाई किंदे तो उन असा इसकी चंगी तरह इसकी मिक्स करसा तो फिर असा इसकी भुनसा 102 मिनट वास्ते तो फिर से कि दसने अगला स्टेप असा क्या करना है. So we just want to give it a good mix and saute it for a few minutes, and then we'll show you the next step. जी असा जेडे मसाले बाय से असा मिक्स करी किंदे तो उन असा था चाहिए किंदा 3 टेबलस्पून टमाटर प्यूरी तो वो असा इसने विच ऐड करसा. Now we're going to add in 3 tablespoons of tomato puree, and we're just going to give it a good mix. The tomato puree gives the chicken a really nice red color, and it also gives it a nice tangy flavor. नाल असा बस थोड़ा जा पानी तो 102 टेबलस्पून जड़ा असा नाल पानी जड़ा ऐड करसा ते इस नाल सही जड़ा मिक्स भी हो जाए चिकन विच तो नाल इसना कलर जड़ा ना फिर सोना चढ़सी चिकन पर. So we've just added in around about 2 to 3 tablespoons of water, just so that the tomato puree can mix really well with the chicken. It will obviously help to coat the tomato puree with the chicken as well, and also the spices will get cooked properly. They won't taste raw. So we'll just give that a few minutes. जी उनसा तकने हो के जड़ा सा पानी विच ऐड कीते असी तो वो माशाल्लाह हुण थोड़ा जा सुकी गया तो कलर भी इसने पर माशाल्लाह सोना आई गया चिकन पर तो माशाल्लाह हुण ही सोना लगना पिया था जिला पूरा तैयार होया था कि ये लगसी. ये हुण असां बाण लगे आ स्वीट कॉर्न तो ये असां किंदा सा 1/4 कप. So our mixture is looking really tasty, and it's cooked really nicely, and the color is beautiful and red. So now we've added in 1/4 cup of sweet corn. So you just want to make sure that you just stir it well and just cook it for a few minutes. You don't want to overcook the sweet corn because we do still want the crunch. इसके 102 मिनट वास्ते सिर्फ असा जड़ा
पकासां बहुत ज़्यादा ना पकाने आ कि स्वीट कॉर्न जेह्ड़े ना ऑलरेडी पक्के वे ये जेह्ड़े ऑलरेडी उबले हुए होने असां ओह् जेह्ड़े फ्रोजन नहीं से तो वैसे टिन विच अछने उबले हुए तो ये जेह्ड़े होए तो 1-2 मिनट वास्ते इसकी रखने आ तो फिर सो कि अगला स्टेप दसने आ कि असां क्या करसां जी हुण असां चाही किंदे इत्थै 2 ग्रीन मर्चां असां इन्हें की पतला पतला कुतरी किंदे So we're adding in 2 green chilies which we have finely sliced. तो नाल असां चाही किंदियां सियां 1 सूई मिर्च तो 1 पीली मिर्च तो ये तेज़ को नहीं होनियां वैसे असां कलरिंग वास्ते बाण लगियां कि इन्हां दा कलर जड़ा सोना होना We're also adding in a yellow and a red pepper. These are like sweet peppers. They're not spicy at all. We're just adding them in for, of course, color and for also texture. हुण असां इसकी 102 मिनट वास्ते ज़रा मिक्स करसां तो कियां कि जिहड़ियां मर्चां ही ना इन्हां दा स्वाद जिहड़ा इन्हां विच रसी जाए तो नाले ना सही करी तरह ना ज़रा कियां थोड़ी जी इन्हां की सॉफ्ट जियां हो जाए बू पकाने ना इन्हां की कि फिर बू जिहड़ा ना पक्की जानी नहीं सही ना ज़रा कि ना क्रंच जिहा होवे ना तो वो फिर ज़्यादा मज़े नहीं होना टेस्टी होनी तुसां जिसलै बाइट करो सही पता लगा कि भाई तुसां quesadillas खाने पियो So of course in quesadillas you can have any filling that you like, but of course our favorite filling is with sweet corn, peppers and chicken, so you get that nice crunch and it tastes really nice and fresh as well, and it's a nice combination, like everything goes really well together, especially when you put like the tomato puree in there and some sauces and stuff. It tastes absolutely delicious. So we're just going to cook the peppers for a little bit. We don't want to overcook them because then they'll go mushy and then it won't taste really nice. You do want them to have a little crunch to it. लून लून जड़ा ना असां अपने साबे पर बाया सा तो तुसां जड़ा लून जड़ा तुसां अपनी मर्जी नाल चखी ते बाई सकने हो कितना बस हो तो मर्चां जड़ियां वो भी असां अपने साबे नाल बाइयां सियां तो तुसां अपनी मर्जी नाल जितनियां भी असां चीज़ां बाइयां तुसां अपनी मर्जी नाल ज़्यादा थोड़ियां करी सकने हो तो बाकी ना तो और सब कुछ सोना ही बनना पिया खैरी नाल तो हुण इसकी ज़रा असां लासा और तो फिर असां दसने अगला स्टेप असां क्या करने आ So of course add the salt and spices according to your own preference. We only added in 1 teaspoon because we don't really eat that much salt. We eat less salt, so we tasted it and it was fine for us. So of course if you do eat more or less, adjust it according to your taste and preference. We're just going to stir this for a few minutes and then we're going to add in some fresh coriander. धनिया जो असा किंदा हैंडफुल जहा किंदा सा असा निका निका इसने बरीक बरीक अगू खाली पत्तर इसने जड़े असा कट्टी ते बस तो ये ऑप्शनल है तुसें गी पसंद है तो बाई किलो असें चंगा लगना इसकी खुशबू सोनी होनी चिकन विच तां वास्ते असां बने So once you've added the coriander in, make sure you give it a good mix. जी हूँ सा तकने हो कि माशाल्लाह सारे मसाले असां बाई किंदे तो जिहड़ियां चीज़ां असां बाणियां असीं बाई किंदियां हूँ सब कुछ मिक्स हो गया तो माशाल्लाह बड़ा सोहना लगना पिया तो हूँ असां इसकी ला लगे गैस करन लगे बंद तो वेट करसां 5 से 10 मिनट वास्ते कि ज़रा कि इसने ठंडा हो जाए तो फिर उसने अगला स्टेप दसने कि असां क्या कर सकते। So our mixture is looking absolutely delicious and it's ready now. We've taken the flame off and we're just going to let it rest for a while just so that it goes a little bit cold, but not too cold, like warm, and then we're going to assemble the quesadillas and then we'll show you how we do it. So we'll meet you back around after 5 minutes. जी हूँ असां लान लगे फ्राई पैन की बटर थोड़ा जा So what you want to do first is apply some butter on the frying pan. You can also use oil as well if you like, but we're just going to use butter. As you can see, it's bubbling away, it's heated up. So now what you're going to do is get a tortilla wrap and you want to place it on top of the butter.
And what we're going to do is sprinkle some cheese at the bottom. So we've sprinkled some cheese at the bottom. Now we're going to add a scoop of mixture on top. Make sure you flat it out as much as possible. So make sure you get it as even and as flat as possible. And then what you want to do is flip the other side over after you apply some cheese. So just put a little bit more cheese on top, because obviously it will get nice and toasted, and the cheese will be melted really nicely, and it'll be very nice and cheesy and creamy. And now what you want to do is flip that over in half, and you just want to make sure that you fry it until it's golden brown on each side. So once one side is golden brown, you want to flip it onto the opposite side and cook that as well until it's golden brown. जी उन्हें 700 तकने के असा टोटिया रैप रखा थला, फिर उसने पर थोड़ी चीज़ बाई, फिर पर थोड़ा कीमा बाया, अपर फिर उसने थोड़ी चीज़ बाई, फिर असा रैप की या प्रति किंदा, तो उन्हें असा वेट करने पे इसकी कि जिचा जिया थोड़ा जिया गोल्डन कलर हो जासीस, तो फिर असा इसकी जरा ना प्रता लासा, तो थोड़ा जो गोल्डन कलर इसना हो गया, तो बिस्मिल्लाह, तो उन्हें असा इसकी जरा ना इस साइड प्रति किंदा, तो हूँ इधरों भी जरा इसना कलर चेंज हो रहा सी थोड़ा गोल्डन जा, तो फिर असा जरा ना इसकी बाहर कड़ी के जी हूँ दूसरे पासा भी हो गया, हूँ असा इसकी कड़ी किन्ने बाहर, तो हूँ असा थोड़ा जा और बटर लाने हैं, तो हूँ असा दुआ रैप जड़ा है असा उसकी विच रखने हैं। बिस्मिल्लाह। So now you just want to repeat the process until all of your quesadillas are made. So as I mentioned before, sprinkle some cheese at the bottom, and then you want to put on top a scoop of your mixture. And make sure you get it as even and as flat as possible. Just keep the corners a little bit free so that, you know, when you flip the side over, it closes properly. You don't want the mixture to be leaking out. And you want to sprinkle a little bit more cheese on top. This bit is optional. You could just leave the cheese at the bottom, but of course it just tastes more better and makes more sense. It'll be more even if you add the cheese on top as well. So now you want to flip it over. And as you can see, it's already turned golden brown. You do want to make sure that you work a little bit quick with it, just so that the tortilla wrap doesn't get too dark and crispy from underneath. So literally you can just keep it on either side for about 1 to 2 minutes and until the cheese has melted, and then you want to transfer it into a plate. So you want to transfer it onto a plate. And of course serve hot. ये ठंडे जड़े ना नहीं फिर सही लगने, ये गरम गरम जड़े ना इन्ना की खाओ तो फिर ज़्यादा ही ना मज़ा होना तो टेस्ट भी होना। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम कड़ी किन्ने आ तो हूँ जड़ा ना उनसे कि दसने हो कि quesadillas असा ने तैयार हो गए, तो असा जड़ी इसने चीज़ बाई सी चड़ा चीज़ बाई सी, तो क्या असा ये मोज़रेला चीज़ को नहीं सी लभी,
तो इस वास्ते अस मजरेला चीज़ ना पाई सके हाँ तो इसने तुसां की माजरत मंगने हाँ तो जे तुसां बनाने हो जिसलै बनासो तो उसलै तुसां जेह्ड़ा ना माजरेला चीज़ बाया ने भी ज़रूर कि उसने ना ज़्यादा जी ना फिर स्ट्रिंगी होनी है तो असां नॉर्मल जी चीज़ पाई है तो इस वास्ते स्ट्रिंगी नीत नहीं हुई तो माशाल्लाह हूँ असां इसकी खाने तो टेस्ट करने कि किया जी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बड़े ही नाइस न, बड़े ज़बरदस्त बनते हैं। तो सब कुछ जड़ा ना अपनी अपनी जगह पर बराबर बराबर है, सारे मसाले तो टेस्ट इसना माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त है। तो बहुत सारे यमी बनते हैं। तो अच्छो तुसां भी सारे तो असा नाल खाओ तो शेयर करो सारे नाल तो माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त बनते। तो तुसां भी जरा ना बनाओ ये रेसिपी असा नी तो खाओ तो अपनी फैमिली फ्रेंड नाल भी जरा ना शेयर करेआ ने ज़रूर इंशाल्लाह। So the quesadillas are absolutely yummy. They're really, really tasty. Everything is on point, seasoning and salt-wise. Of course, we've used cheddar cheese, and you could also use mozzarella cheese as well. The good thing about mozzarella cheese is that it's really stringy. So if you like your quesadillas or your wraps really stringy, of course, add mozzarella cheese in. We just couldn't find it and we were running short on time. So we just used cheddar. But of course, we also use mozzarella as well. So you could use both, or you could just use cheddar on its own or mozzarella on its own, whatever you fancy. But the recipe is absolutely tasty. It's really, really delicious. I'm going to eat one right after this video. And I've tasted it and it's absolutely delicious. And don't forget, guys, to try out our recipe and do let us know how it turned out. And if you liked it, of course, leave it down below in the comments and message us on Instagram as well. And inshallah, we will be bringing you loads more recipes as well. नाले असा बड़े बेताबी नाल तुसां ने मैसेज ना इंतज़ार करने होने आ कि असा ने भैनां भरा जेह्ड़े असां की मैसेज करसन बासन बनासन कोई डिश तो असां की बासन तो प्लीज़ प्लीज़ असां की मैसेज ज़रूर करी छड़िया करो तो असां की बाया करो कि असां नी रेसिपी तुसें की किया जी लगी है तो किस तरह नी पसंद आई है। तो असां की पता है असां ने भैनां भरा माशाल्लाह माशाल्लाह असां ना चैनल तकने बहुत सारे तो असां ने बहुत सारी अगले सपोर्ट भी करने हो तो असां तो बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला असां सारे की सतरा भैनां भरा की खुशबाश रखा है, तियां पुत्रां की खुशबाश रखा है। तो असां थोड़ी जी तुसां नाल हुण चीटिंग भी करया करसां कि कुसै अल्ल असां विच कुकिंग दी वीडियो पाया करसां, कुसै अल्ल असां व्लॉग विच सट्टिया करसां। तो असां हुण करन लगे आं इसकी इत्थै ही बंद। तो कि'यां कि असां हुण तक्की ते इसकी तो असां ने मूंह च पानी अचना पिया तो असां केह्ड़े वेल्ले आखने ख़त्म करां तो असां इसकी फटाफट खाई जाओ। तो गरम गरम है तो चलो ठीक आ। तो मैं तुसां कोलों इजाज़त मंगनी आ। तो माड़ी जेह्ड़ा इस अज्ज दी वीडियो जेह्ड़ी आ तुसां लाइक भी करेआ ने, अपने फैमिली फ्रेंड नाल शेयर भी करेआ है। तो माड़े चैनल की जेह्ड़ा सब्सक्राइब भी करी किने आए। तो जेह्ड़े नवे बंदे असां चैनल पर आए वे ओह् भी सब्सक्राइब ज़रूर करी किने आए। तो बैल ना बटन की ज़रूर दबाया ने कि तुसां की जेह्ड़ा असां ना नवी वीडियो ना अपडेट लभी जाए तो तुसें की पता लगी जाया करा कि असां ना नवा जेह्ड़ा वीडियो आई गया। तो ये ज़रूरी करना ने प्लीज़ प्लीज़। तो चलो ठीक आ, इस नाल मिगी दियो इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।